तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं उन 59 ऐप्स चाइनीज़ ऐप्स के जिसे इंडिया में बैन कर दिया गया है, इंक्लूडिंग टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र एंड सो मच। बट इसमें खुशखबरी ये है, और शायद दूसरों के लिए शायद नहीं हुई ये खुशखबरी की, पबजी इज़ नॉट गोइंग टू बी बैन इन इंडिया। पबजी को बैन नहीं किया गया है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो ऐप हैं जो बैन हो चुके हैं। फुल लिस्ट ऑफ चाइनीज़ ऐप बैन बाय द गवर्नमेंट: TikTok, Shareit, Kwai, UC Browser, Baidu Maps, Shein, Clash of King, Beutry Plus, Helo, Likee, YouCam, Makeup, MI Community, CM Browser, Virus Cleaner, APUS Browser, ROMWE, Club Factory, Newsdog, Beutry Plus, WeChat, UC News, QQ Mail, Weibo, Xender, QQ Music, QQ Newsfeeds, Vigo, Live, SelfieCity, Mailmaster, Palace Space, 31.mi Video Call, Xiaomi, WeSync, ES File Explorer, Viva Video, Meitu, Vigo Video News, New Video Status, Duo Recorder, Vault Height, Jack Cleaner, Duo App Studio, Duo Cleaner, Duo Browser, Hago Play with New Friends, Cam Scanner, Clean Master, Wonder Camera, Photo Wonder, QQ Player, Vmate, Sweet Selfie, Baidu Translate, Vmate, QQ International, QQ Security Center, QQ Launcher, Video, Vfly, Status Videos, Mobile Legend, Due Privacy। तो गाइज ये थे 59 ऐप जिसे इंडिया में बंद किया गया है। So guys, hope you like the videos. If you like the video, please share, subscribe our channel. और ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर इंडियंस को पता चले कि उनके अपने डिवाइस से कौन कौन से ऐप्स को डिलीट करना है। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँ कि हाँ, पबजी बैन नहीं हुआ, लेकिन ये आपके लिए मैंडेटरी है कि आप इसे अपने डिवाइस में रखना चाहते हैं या नहीं। दैट्स ऑल गाइस, थैंक